Good morning, children. We'll start our class just in 2 minutes, okay? Because students they need to add na. Good morning. Just 2-3 minutes we'll wait. Remaining students also they need to join na. Chalo, children, I think there is no point to wait. It's already 11:35. Shall we start or one more minute we'll wait? Start. Okay, then we'll start. Oh, still few more students are getting added. I think Vacho, I think we need to wait 2 more minutes, okay? Because still some students are adding just 2 more minutes, okay? Only 2 more minutes.
Okay, children, we'll start. Okay. So, as I already told you, children, so in the last lecture, I told you today we are going to start our actual syllabus. Okay. No more introduction. In the last class itself, whatever the introduction we need to take for biology, that complete introduction I already gave you. Okay. So, today we are starting the actual syllabus of biology. Biology में 38 chapters are there बच्चों. How many chapters? 38 chapters. And these 38 chapters are included under 10 units. So how many units? 10 units. Okay. So the first unit is diversity in the living world. What is the first one? Diversity in the living world. This is the first unit. Like that, आपको कितना units है? There are 5 units. Sorry, 10 units are there. 5 units in 5 units in your 11th class and 5 units in your 12th class. Okay. 11th class में 5 units you will read and 12th class में 5 units you will read. Understanding it? So इसमें half chapters, आधा chapters में लेता है. Okay, and other chapters you are attending Shet sir lectures na, so he will take week में 3 दिन he will take the classes, 3 दिन I will take the classes. You're understanding it? Now unit number 1 is diversity in the living world. Okay, this diversity in the living world, the first unit has 4 chapters. How many chapters bachcho? 4 chapters. What are they? The chapter number 1 is living world. See, idhar mein likha clearly. Okay, this is a chapter number 1, that is what? Living world. And the second chapter is biological classification. The third chapter is plant kingdom and the fourth chapter is animal kingdom. Understood, children? So like that, there are 4 chapters are there in the first unit. Okay, and first unit में today's class में I will start first unit में first chapter, that is nothing but the living world. Understood, bachcho? Shall we start? Or I think everyone must have added. Okay, I need not to wait anymore, so we'll start. Okay. Yes. If you take the living world chapter, the very first topic is nothing but what is living. Living matlab kya hai? Life matlab kya hai? Okay, what is the meaning of life? Anyone, whatever you know, you tell me. There is no need to worry. Okay, आपको क्या पता है वो बोलिए. What is the meaning of living? Life मतलब क्या? You are all living ना? आप तो जिंदा है ना? So what do you mean by living? I am waiting for your answer. Huh? What आपको क्या पता है वो ही बोलिए. There is no problem. Okay, I don't know why you are not telling, but I will tell. Okay, at least after I tell, let me see, you will tell. I think so. Life matlab, bachcho, if you take any living organism, all the living organisms are made up of cells. है ना? That is the reason why we used to call cell is the fundamental unit of every living organism. You, me, एक छोटा बिल्ली, छोटा चूहा, understanding it, और छोटा ant और elephant, giraffe, छोटा से बड़ा हर एक organism, it is made up of cells only. Understanding it? Such cell, if you take, again you take our body, it is made up of what? Cells. Am I correct or not? Now again, if you take that cells, the cells are made up of various biomolecules. Sir, what are the biomolecules? What are the biomolecules? Tell me. These biomolecules are: 1, carbohydrates. Okay, and the second one is what? Proteins. And the third one is what? Fats. You're understanding it? That and the fourth one is also there, that is nothing but nucleic acid. Nucleic acids. Understand nucleic acids बच्चों आपको पता है ना? I think you know, because nucleic acids we will teach in 8th 9th classes only. Nucleic acids मतलब DNA,
and RNA, DNA and also what RNA. Understanding it? So these are called as what biomolecules. And our cell, our body is made up of what, bachcho? Cells. And again, our cells are made up of what? Biomolecules. Understanding it? That means if anyone asks life, life is a unique combination. I repeat once again, bachcho. Life is a unique combination of various biomolecules. Okay, life is a unique combination of various biomolecules. These biomolecules, they express themselves. That means these biomolecules which are present in the cell na, they don't be quite bachcho, they perform various chemical reactions. For example, I am there, I am your teacher. Me silently bite rahe kya? I am speaking something like that. In your cell, the biomolecules are present na. That biomolecules are expressing themselves in form of chemical reactions. And that particular expressions only are calling it as the continuous interaction. The interaction between the biomolecules in form of chemical reactions, and that only are calling it as life. Sir, मान लो this biomolecules they don't participate in chemical reactions, sir, क्या होगा? हम मर जाएगा. You're understanding it? मान लो the cell which is made up of biomolecules, that biomolecules stop interaction, that means हम गया and we are all gone. You're understanding it or not? That means the cell which is made up of biomolecules, and these biomolecules, they need to interact with each other in form of chemical reactions, then only we can be able to live. Sir, what you are telling? Biomolecules, they continuously interact in form of chemical reactions, sir. For what? For digestion, for circulation, for respiration, for excretion, for nutrition. That means these chemical reactions takes place for any reason. That may be for digestion, or that may be for circulation, or that may be for respiration, or that may be for excretion, for anything. Understanding it? They will continuously participate in the chemical reactions, and this expression only you are calling it as life. But I told, at least now you tell. But before you tell na, ये once again I'll repeat, because सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट. आप तो नया बच्चा है ना, इसलिए और एक बार मैं एक्सप्लेन करेगा, रिवाइज करेगा, एक्सप्लेन नहीं करेगा. आई जस्ट रिवाइज इट एंड देन यू प्लीज आंसर. ओके, now today I started the chapter number 1. Understanding it? The first chapter is living world. Again, the first chapter of living world, the first chapter living world में the first topic is what is life. लाइफ मतलब क्या है? लाइफ इज ए यूनिक कॉम्बिनेशन. लाइफ इज ए यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस biomolecules. I repeat, life is a unique combination of various biomolecules which are expressing themselves of various chemical reactions, and that chemical reactions may be for digestion, that chemical reactions may be for respiration, whatever it may be. But these biomolecules, they continuously react with each other, and these continuous interaction between biomolecules only you will call it as life. बच्चों समझ में ना? So now I explained you and I revised you also. Now I am expecting answer from you. What is life? थोड़ा जल्दी बोलिए बच्चों प्लीज. Repeat. Okay. Life is a unique, that means a kind of unique, okay, special combination of various biomolecules. Okay, and that biomolecules, they continuously interact with each other in form of chemical reactions, and these continuous interaction between biomolecules in form of chemical reactions, and that only are calling it as life. Now समझ में ना बेटा? Who asked? श्रवण निशिकांत. यस, श्रवण निशिकांत. समझ में ना बेटा? और एक बार बोलो.
Understood. Very nice. Very good. And Amrita gave the answer. Yes, Amrita, your answer is perfect. Okay. Life is a unique combination of biomolecules express themselves in form of chemical reactions that leads to growth, development, adaptation, anything, evolution or anything. Understanding it? And this combination, this set of chemical reactions, you are calling it as a life. ओके सो लाइफ मतलब समझ में ना बच्चों कैन आई टेक द नेक्स्ट टॉपिक कैन आई टेक द नेक्स्ट टॉपिक लाइफ तो सबको समझ में है ना ओके आई विल टेक द नेक्स्ट टॉपिक बच्चों now till now I explained about life है ना बच्चों and you only told you understood okay now I am see I am living है ना at least you accept that ना मैं बात तो कर रहा है ना that means I am living only ना I am living matlab I need to show some characteristics am I correct or not so the living organism what are the characteristics it is showing that I am going to explain now if you take the characteristics growth and reproduction these two are the characteristics which are called as non-defining properties or non-defining characteristics of an organism whereas metabolism response and cellular organization these are the three characteristics which are called as defining properties sir you are telling growth reproduction metabolism response cellular organization these are the what I call characteristics of living organisms but you are telling growth and reproduction are the non-defining properties whereas metabolism response and cellular organization is defining properties sir क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं why are you calling growth and reproduction as non-defining properties very simple I don't confuse your brains bachcho that too you are very new students so I should not confuse your brains simple question I'll ask एक आदमी मान लो he took birth मान लो this is a boy or girl this is a person it may be boy or girl whatever it may be this is the person took birth now due to some reasons whatever it may be this baby did not grow much tall understand it that baby इतना ही छोटा ही रह गया now will you tell that that organism is not allowed to live आप ऐसा बोल सकते हैं क्या आप इसी I did not ask the question from rocket science simple एक छोटा बेटा he took birth and he did not grow up to or like regular height for example you are all there आप इतना बड़ा बड़ा हो गया ना but वो बेटा है ना अच्छा से he did not grow अंडरस्टैंडिंग इट वो छोटा हो गया दैट मीन्स ड्वार्फिज्म हो गया ड्वार्फ मतलब पता है ना बहुत बहुत छोटा छोटा दिखता है नाउ विल यू टेल दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट हैविंग एलिजिबिलिटी टू लिव ऐसा बोल सकते हैं क्या विल यू ऐसा बोलेगा तो इट्स नॉट करेक्ट understanding it first of all it's not correct understanding it that means see growth is characteristic see I am a teacher so I need to accept but only growth ka dwara you should not decide that that organism is living am I correct or not will you agree with my statement or not yes growth is a characteristic but only growth only growth don't decide whether the organism is living or non-living am I correct or not simple very simple question I asked only if this organism grow that आदमी जिंदा जी रहे he is not growing मतलब वो आदमी tomorrow we have to kill him ऐसा बोल सकते हैं क्या no ना that means growth is a characteristic but growth is not the compulsory character बट समझ में ना होप आई एम नॉट कंफ्यूजिंग यू ग्रोथ इज अ कैरेक्टर बट ग्रोथ इज नॉट अ कंपल्सरी कैरेक्टर इफ आदमी बढ़ेगा तो वो जीने के लिए उसको राइट है वो आदमी नहीं बढ़ेगा तो उसको जीने के लिए राइट ही नहीं है हम उसको मार देता है ऐसा बोल सकते हैं क्या इट्स अ क्राइम बच्चों हमें इट्स एक्चुअली अ क्राइम यू अंडरस्टूड भैया आपको समझ में आ रहा है ना are you getting my point why growth it is not called as defining what again non-defining characteristic like that same example because this example you are understanding now that's why I'm continuing the same example again the same admi he took birth
and he did not get married. That means he's not married. Understanding it? And of course, if he or she don't get married, how can they can be able to get the babies? Am I correct? Not so. No reproduction. So he did not get married or she did not get married. So there is no babies. Understanding it? There is no children. Now you tell me, अरे यार तू शादी नहीं किया, that's why tomorrow I'm going to kill you. You are not allowed to live. ऐसा बोल सकते हैं क्या? If you tell like that, what will you be safe? वो आके मारेगा. Understanding it? Am I correct? Not that means now you tell me reproduction is a characteristic, but reproduction is compulsory. Like compulsorily you have to get married. If आप जन्म लिया मतलब you have to get married. Understanding it? And you have to give birth to the children. ऐसा राज्यांग में ऐसा point है क्या? You only tell me. No, no. So, though that means reproduction is a characteristic, but it is not a, it is not a, it is not a compulsory characteristic. Understood, bachchon? That's why growth and reproduction, they are characteristics of living organism. इसमें 0.1% doubt भी नहीं है बच्चों. They organisms, they have to grow and reproduce. Understand it? But they are not compulsory. And so, for example, I am telling you, I'm talking about my childhood. Understanding it? I have Prabhakar. I repeat repeat the name. There is one particular teacher. His name is Prabhakar. He's not married. Fantastic teacher. Fantastic teacher. And big fans are there for his lecture. Understanding it? And many students are absent for remaining classes, but Prabhakar sir class ke liye everyone used to attend. That is the greatness of that particular teacher. So whatever it may be, of course he is my teacher, and I'm so blessed because I got such kind of very great eminent teachers. He's not married. Understanding? He don't have any kids. Understanding it? But now you tell, अरे प्रभाकर sir is not married, so he's not allowed to live. ऐसा बोल सकते हैं क्या? आप ऐसा बोलेगा तो चलेगा at least? No, na. That means these are characteristics, but they are not compulsory characteristics. Now I think you understood why growth and reproduction are called as non-defining properties. समझ में ना बच्चों? सच बोलिए. Please don't hide your doubts. Feel free in my class. Every time I'm telling that only. In biology class, you feel free. Understanding it? How you will talk to your parents? In the same way you talk to me. Understanding it? आपका brother से, आपका mother से, आपका father से, how you will talk na? You also talk with me like that. Okay? Now, see, I did my job. You only told. आप ही खुद ही बोला. आपको समझ में आया. So I have to ask one question na. Why are you calling growth and reproduction as non-defining characters? Let me see. You told you understood na. If you really understood, you definitely will tell. Let me see who will answer. Question समझ में ना? Growth and reproduction you are calling as a non-defining characteristics. Why are you calling them as non-defining characteristics? That is my question. Yes, Shravan gave the answer because those are not compulsory. Yes, you are perfect, Shravan. Yes, perfect answer. Yes, because it is not compulsory, we can live without them. Yes, correct. Who gave this answer? Tanishk gave this answer. Yes, Tanishk, excellent, you are correct. And Anuja gave one more answer. Growth and reproduction are characteristic, but they are not compulsory. X. Anuja is perfect. Anuja is perfect answer. Anuja's answer is perfect answer. Okay, very good. So I think you are answering matlab 100% you understood. Whereas the next three, metabolism, response and cellular organization. बच्चों, metabolism, response and cellular organization, they are defining characteristics. That means if you are living, बच्चों याद रख, if these three are not there तो you can't be able to live. For example, if metabolism is not, बच्चों metabolism पता है ना बच्चों? You know metabolism, or shall I tell you? मेटाबॉलिज्म मतलब इन आवर बॉडी केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस ना. मान लो मेरा बॉडी एग्जांपल के लिए बोल रहे हैं, प्लीज डोंट थिंक दैट 100 ओनली टेक्स प्लेस. नो, एग्जांपल के लिए बोल रहे हैं. मान लो दिस इज वन ऑर्गेनिज्म.
and this organism में 100 chemical reactions are taking place. बच्चों again I'm telling you, this is example के लिए बोल रहे हैं बच्चों. हमारा बॉडी में 100 होते हैं, thousands and thousands of chemical reactions takes place. You know that? Thousands. अंडरस्टैंडिंग इट. मैं एग्जाम्पल सिर्फ आपको समझ में आने के लिए सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोल रहे. मान लो एक आदमी है, उसका बॉडी में 100 केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस. दैट केमिकल रिएक्शंस फॉर मे बी डाइजेशन, फॉर रेस्पिरेशन, वॉट एवर इट मे बी, बट 100 केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस. एंड ऑल द केमिकल रिएक्शंस, आई रिपीट, all the chemical reactions that takes place in the body of an organism is called metabolism. Now you understood? Of course, I think you know, because metabolism है ना 7th 8th class में आता है. your school teachers must have told metabolism मतलब, but सेफ्टी के लिए और एक बार रिवाइज किया मैं, इतना ही और कुछ भी नहीं. बट आपको समझ में है ना मेटाबॉलिज्म मतलब? और एक बार बोलना है क्या बच्चों? यस, समझ में. Shravan told he understood. Okay. Whereas response, now you tell me, response, बिना response, you tell me, आप रोड पे जा रहे हैं बच्चों, आप खुद ही बोलिए. आई एम नॉट big questions तो आई एम नॉट आस्किंग, इन सिंपल बेसिक क्वेश्चंस ओनली आई एम आस्किंग. मान लो यू आर वॉकिंग ऑन द रोड, मान लो आपको पीछे से गाड़ी आ रही है, अंडरस्टैंड, वो हॉर्न मारा, यू नीड टू रेस्पॉन्ड और नॉट. मान लो आप रेस्पॉन्स नहीं दिया, वो टोक के जाएगा, दैट्स इट, एंड यू विल डाई. am I correct or not? that means आप रेस्पॉन्स देना है. मान लो आप एक क्रॉप फील्ड में जा रहे हैं, सडनली एक सांप आया, अंडरस्टैंड इट, इमीडिएटली यू नीड टू जंप फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस. इफ यू डोंट जंप ना, ये मेरा जगह है, ये मेरा वड़ेगा खेत है, मैं क्यों जाना है, ऐसा करेगा तो वो सांप अच्छे से काटेगा एंड यू विल गो. am I correct? That means you need to give some response. So बिना response we can't be able to live. कंपल्सरी. इफ यू आर लिविंग मतलब बच्चों यू आर फीलिंग हंग्री, मम्मा मुझे खाना दो, रेस्पॉन्स तो देना है ना. आपको भूख लग रही है बच्चों, अंडरस्टैंडिंग इट, सो यू नीड टू गिव रेस्पॉन्स. व्हाट इज दैट रेस्पॉन्स? यू नीड टू गो टू योर मदर एंड आस्क योर मदर टू फीड समथिंग, यू नीड टू ईट. दैट मीन्स योर बॉडी इट इज आस्किंग यू समथिंग, you need to respond. Your body what it is asking? Khana. And you have to give khana. So you need to respond. Bina response, will you be able to live? Simple question. Will you be able to live without giving response? Yeah, you are telling the answer. So there is no response, there is no life. So compulsory, correct only na. And cellular organization. Sir, ye kya hai sir? Cellular organization matlab our body, it is made up of cells, and cells they need to organize to form tissues, and tissues they organize to form organs, and organs they join to form organ system, and organ systems they need to form a body. That means this is sequence of arrangement must be there. मान लो if the sequence of arrangement is not there, your body construction होगा क्या? You only tell me. आपका body construction होगा है क्या? Cell जैसा ही है. Cell is like cell only. Then how the body will be formed? You only tell. So cell अच्छा से it may need to make a group, tissue बनाना है. Tissues again अच्छा से it has to make a group and वो organ बनाना है. Organs again they need to form a group, organ systems बनाना है. And all the organ systems they join to form this body. Correct only ना? So are you understanding बच्चों? So now you tell me, metabolism, response and cellular organization, they are the characteristics and they are compulsory. They are compulsory. आपको चॉइस नहीं है. सर मुझे है ना अच्छा नहीं लगता है सर. आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप मर जाएगा. अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट? दैट मीन्स दिस थ्री आर कंपल्सरी. आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा मतलब ही नहीं. These three you need to follow. That's why they are called as defining characteristics or defining properties of living organism. बच्चों समझ में है ना? Why metabolism, response and cellular organization is called as defining properties. और एक बार बोलूं क्या सेफ्टी के लिए, और आपको समझ में आया? You understood? आपको समझ में? Yes. Okay. As you told S. Now आपको एक क्वेश्चन देता है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन. वाई आर यू कॉलिंग मेटाबॉलिज्म, रेस्पॉन्स एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आर डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज? क्यों? वाई आर यू कॉलिंग लाइक दैट?
they are essential to live. Yes, correct. Sakshi gave the answer. Yes, Amruta gave the answer, compulsory to live. Yes, correct. Amruta, Sakshi, they gave the answer. Very good. So you understood. So can I go for the first characteristic, bachcho? Yes. Yes, very good. नाव देखो बच्चों, मेटाबॉलिज्म। बच्चों मेटाबॉलिज्म मतलब अराउंड 5 मिनट और 10 मिनट, मुझे याद नहीं है, मे बी 5 मिनट के पहले आई थिंक आई टोल्ड यू व्हाट इज मेटा, बिकॉज दे आर कंपल्सरी। यस, यस, करेक्ट, करेक्ट। हु गिव आदित्य, अंडरस्टैंडिंग इट, प्रतीक्षा, एवरीवन, एवरी निशिकांत, एवरीवन गिव द आंसर, वेरी गुड, थैंक यू। वेयर द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम एंड वो 5 है ना, वो 5 कैरेक्टर्स हम पढ़ना ही है, अंडरस्टैंड, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन आवर सिलेबस। ओके, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आई एम टेलिंग यू व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या बच्चों? आपको जो व्हाट यू नो दैट यू टेल, रॉन्ग है तो आई विल करेक्ट यू, यू डोंट वरी, मैं है ना, सो आई विल करेक्ट इट। ओके, आपको क्या पता है मेटाबॉलिज्म मतलब, व्हाट यू नो अबाउट मेटाबॉलिज्म? I'm waiting for your answer. That's why I'm not speaking. Don't think that why I'm not speaking. I'm just looking for your answer. That's why I'm not speaking. What is metabolism? आपको metabolism मतलब क्या पता है? What you know? The total chemical reactions happens in the body is, yes, perfect, perfect. You gave perfect answer. Who gave this? Aditya gave, and Amruta, all the chemical reactions, yes, and Rahul, chemical reactions happen, yes, 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 very good. Acha, अच्छा, वेरी नाइस। यू गे, दैट मीन्स आपको मेटाबॉलिज्म, एक्चुअली मेटाबॉलिज्म है ना, आप है ना, यू विल रीड इट इन योर 6th and 7th क्लासेस ओनली, वेरी यंगर एज में ओनली यू विल रीड, बट स्टिल यू हैव टू रीड। ओके, सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट ना, दो आपको पता है फिर भी बीइंग ए टीचर आई हैव टू एक्सप्लेन। ओके, सो मेटाबॉलिज्म मतलब द टोटल नंबर, मेरा बॉडी है, मान लो मेरा बॉडी है, मेरा बॉडी में लेट अस टेक 1000 chemical reactions are taking place, and all these chemical reactions that takes place in my body together called as what? Metabolism. Understanding it? And very nice, आपने आंसर दिया, understanding, I am so happy for you. Okay, such chemical reactions, that means metabolism, that means बच्चों मेटाबॉलिज्म मतलब इनडायरेक्टली केमिकल रिएक्शंस, इनडायरेक्टली क्या, डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म मतलब केमिकल रिएक्शंस दैट टेक्स प्लेस इन द बॉडी। Such metabolism, it takes place in 2 ways. What are the 2 ways? The first one, it is called as anabolism, and the second one, it is called as catabolism. Again I repeat, metabolism, that means chemical reactions, are of 2 types. What are the 2 types? One, catabolism, two, anabolism. So anabolism and catabolism are the 2 types of the metabolisms or chemical reactions that takes place in the body. Let us take one after one. Anabolism मतलब, थोड़ा ध्यान से सुनो बच्चों, थोड़ा ध्यान से सुनो। एनाबॉलिज्म मतलब द केमिकल रिएक्शन, आई रिपीट वंस अगेन, द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more, बच्चों व्हाट इज दैट? 2 or more, अंडरस्टैंडिंग इट, द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more small molecules, 2 or more small molecules, they join, अंडरस्टैंडिंग इट। सो ये दो और इससे भी ज्यादा छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स है ना, वो साथ में बाइंड होगा टू फॉर्म ए बिग मॉलिक्यूल, एंड दैट इज कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म, अंडरस्टैंडिंग इट। सो दैट मीन्स दो और इससे ज्यादा छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स साथ में ज्वाइन करके एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल इज फॉर्मिंग, then that chemical reaction is called as anabolism. So the chemical reaction in which two or more two or more small molecules, they join to form one big molecule is called as what? Anabolism. बच्चों समझ में है ना what is anabolism? बच्चों is this clear? और एक बार बोलूं क्या मैं? Anabolism समझ में है बच्चों आपको? Yes,
ओके, एक एग्जांपल, ऑफ कोर्स यू टोल्ड यू अंडरस्टूड आल्सो, बट सेफ्टी इंपॉर्टेंट है ना बेटा, सेफ्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल भी देते हैं, अंडरस्टैंडिंग इट, एनाबॉलिज्म आपको समझ में है, बट स्टिल एक छोटा एग्जांपल देते हैं। ओके, व्हाट इज दैट? आपको फोटोसिंथेसिस से पता है ना सबको, आई थिंक 23 स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग मेन क्लास, सबको फोटोसिंथेसिस से पता है, अंडरस्टैंडिंग। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बच्चों? 6 कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स ओनली ना, carbon dioxide are small molecules only na, and 12 water molecules, how many bachcho? 6 carbon dioxide molecules, they join with what? 12 water molecules in the presence of what? Sunlight, and they forms what? C6H12O6, दैट मीन्स C6H12O6 मतलब क्या है बच्चों? आपको पता है ना, आप केमिस्ट्री भी, केमिस्ट्री स्टूडेंट्स आल्सो नो C6H12O6 मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज, अंडरस्टैंडिंग इट नाउ। ग्लूकोज इज अ बिग मॉलिक्यूल, बड़ा बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, एंड दिस बड़ा मॉलिक्यूल हाउ इट इज फॉर्म्ड? बाय द जॉइनिंग ऑफ व्हाट? छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दैट ओनली। सी मैं एनाबॉलिज्म में क्या बोला बच्चों, आप ही बोलिए, मैं अब भी जस्ट 2-3 मिनट के पहले ही बोला, मैं क्या बोला? एनाबॉलिज्म मतलब दो और दो से ज्यादा छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स दे साथ में बाइंड होके एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा, दैट ओनली ना। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड छोटा मॉलिक्यूल्स, वाटर तो बिल्कुल छोटा मॉलिक्यूल्स है, अंडरस्टैंडिंग। सो दो और दो से ज्यादा छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स दे जॉइन टू फॉर्म एक बड़ा मॉलिक्यूल कॉल्ड ग्लूकोज, एम आई करेक्ट और नॉट? एंड दिस इज, दैट मींस फोटोसिंथेसिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर एनाबॉलिज्म। बच्चों समझ में है ना? बच्चों इज दिस क्लियर? और एक बार बोलूं क्या, आपको एग्जांपल समझ में है? ओके ना, मैं खत्म किया, अभी आप बोलना है, आप बोलना है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मेटाबॉलिज्म, एंड गिव वन एग्जांपल। सो आई एम आस्किंग यू, सो यू टोल्ड यू अंडरस्टूड ना, सो इफ यू रियली अंडरस्टैंड यू हैव टू टेल मी द आंसर, व्हाट इज एनाबॉलिज्म एंड गिव वन एग्जांपल, छोटा छोटा क्वेश्चन, प्लीज आंसर। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर बच्चों। यस, when two or more molecules, small molecules, या करेक्ट, ये मिस्टेक तो नहीं है तनिष्क, इट्स नॉट अ मिस्टेक, एक छोटा कंफ्यूजन, ये टू आर मोर स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ओके, combine to form a big molecule, then that is called as anabolism, and example is photosynthesis. Very nice, very nice, very very good, very good. Even Shravan also gave the answer. Shravan, anabolism is the chemical process in which takes place in our body, in which two or more small molecules form a bigger molecule. Yes, perfect, very very good. Even Shravan also, he gave perfect answer, where Sakshi also gave one answer, two or more than two molecules join with each other to form a big, yes, correct, correct. Anuja also gave the correct answer, and Amruta, as usually, Amruta every time she will give correct answer only, understanding it, and Amruta every time she will answer, and Tejal, yes, correct, yes, macho. So you understood anabolism, understood? Now the next one is catabolism, macho. What I told, whatever I told in anabolism ना, exactly उसको opposite लिखो, exactly उसको opposite लिखो, आपको कैटाबॉलिज्म समझ में आएगा। सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ exactly opposite लिखो, पक्का समझ में आएगा। सर आप बोलिए ना, मैं आई विल टेल बच्चों, डोंट वरी, मैं है ना, बट आप ट्राई करो, ट्राई एटलीस्ट, एग्जैक्ट ऑपोजिट, उसको एज इट इज ऑपोजिट करो, एनाबॉलिज्म को, कैटाबॉलिज्म आपको आएगा। ट्राई ट्राई, इफ यू सी, इफ यू कांट, आई एम देयर ना, तो मेरा सिर पे छोड़ दो, एटलीस्ट आप ट्राई करो, आपका साइड से आप ट्राई करो। ओके, आई थिंक यू आर नॉट गेटिंग, सो आई विल टेल एंड देन यू आंसर, चलो। या सी,
Anuja gave the answer. Breaking of one big molecule into two or more. Yes. Perfect. Anuja, very good. Very good, beta. Even Amrita, as it is, Amrita always answer. And one big molecule. Yes, perfect. Amrita. Even Mrudula also gave the answer. Tanishka also gave the very, very good. Very, very, very good. Nishika, sorry, Shravan. Yes, one big molecule, एक बहुत बड़ा molecule, it breaks into two or मोर देन टू स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स. सर एक एग्जांपल बोलिए, तब हमको अभी समझ में आया सर, बट स्टिल और अच्छे से समझ में आएगा. सो एक एग्जांपल बोलिए बच्चों. हमारा बॉडी में हमारा बॉडी में रेस्पिरेशन होता है ना. रेस्पिरेशन मतलब इंट्रोडक्शन में मैंने बोला, रेस्पिरेशन मतलब इंट्रोडक्शन में मैंने बोला प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. रेस्पिरेशन मतलब क्या है? द एनर्जी इन आवर बॉडी विल बी प्रोड्यूस्ड बाय respiration only. Understanding it? So C6H12O6, that means glucose, it will break down in the presence of oxygen. Oxygen का presence में this glucose molecule है ना, it will break to form CO2 plus H2O. Understanding it? And it gives some energy. Now you tell me the chemical reaction में एक बड़ा molecule, it is broken into छोटा छोटा molecules. That only ना you told. At least catabolism में भी नहीं बोला, आप खुद ही बोला. And like this is called interest. You are very very अच्छा, आप अच्छा से सुन रहे इसलिए आप आंसर दे रहे हैं. See, everyone gave correct answer only. At least single student also did not give wrong answer. All they gave correct answer. सी एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, सी ग्लूकोज इज अ बड़ा मॉलिक्यूल ओनली ना. एक बड़ा मॉलिक्यूल, इट इज ब्रोकन इनटू छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड दैट इज कॉल्ड एज, दिस ब्रेकडाउन इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म. बच्चों समझ में है ना? समझ में ना? यस. ना एनाबॉलिज्म में बच्चों, एनाबॉलिज्म में एक छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स है ना, दे जॉइन टू फॉर्म ए बिग मॉलिक्यूल. So can I call by any chance anabolism as a constructive process? Can I call like that? बच्चों मैं सही बोल रहे हैं, मैं सही बोल रहे हैं ना? Anabolism is called as constructive process, correct only ना? Whereas catabolism को क्या बोल सकते हैं हम? Destructive process बोल सकते हैं. Am I correct or not? So anabolism is also called as constructive process, whereas catabolism is called as a destructive process. समझ में है ना बच्चों? With this पहले कैरेक्टरिस्टिक खत्म, पहले कैरेक्टरिस्टिक खत्म किया बच्चों हमने. ओके, वी कंप्लीटेड द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक. कैन वी टेक द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक? शैल वी टेक? ओके. आपको बच्चों फास्ट हो रही है, आर यू कंफर्टेबल ना? मेरा क्लास ऐसे ही रहेगा. आप 2 साल, 2 साल आई टीच ना, मैं कभी भी ऐसा ही टीच करेगा. फास्ट तो नहीं, आप कंफर्ट जोन में है ना, फास्ट नहीं हो रहे ना आप. मैं ऐसा बात करेगा तो कंफर्ट. ओके, आर टेलिंग यस. ओके, वेरी गुड. यस बच्चों, एक छोटा क्वेश्चन है. दिस इज सर, ये क्वेश्चंस का हम बोलते हैं नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस बोलते हैं, और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन. दैट मीन्स आपको क्या समझ में आया, लाइक दैट हमारा आईक्यू टेस्ट करता है ये स्मॉल क्वेश्चंस. अंडरस्टैंडिंग, दिस इज एक्चुअली स्मॉल क्वेश्चन. आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस. बच्चों आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस मतलब क्या? समटाइम्स केमिस्ट्री लैब में केमिकल रिएक्शंस आप करता है ना, एंड दैट केमिकल रिएक्शंस दे गिव द, सी हमारा बॉडी में क्या रिजल्ट्स देता है, if you do it in test tube also the same result will come, है ना बेटा? So now you tell me the isolated metabolic reactions, that means हम test tube में करता है ना, that what you need to explain again बेटा? प्रतीक्षा ना, प्रतीक्षा, I think so she is प्रतीक्षा only. what should I explain बच्चों बेटा? और मुझे समझ में नहीं है, what you want, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म और पूरा, what you want me to explain? आइसोलेटेड. हाँ ओके. आइसोलेटेड मतलब बेटा देखो, if you take some test tube sometimes in your chemistry laboratory, see I think all of your schools they consist of chemistry laboratory है ना.
है ना? आपका स्कूल में केमिस्ट्री लैबोरेटरी है ना? सो इन योर केमिस्ट्री लैब यू विल डू सम केमिकल रिएक्शंस इन टेस्ट ट्यूब्स, am I correct not? And ये टेस्ट ट्यूब में कैसा केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस, द सेम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस दे टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी आल्सो. Am I correct or not? So whatever the chemical reactions that are taking place in our body, the same type of chemical reactions you can also perform in the test tubes artificially. And this artificial chemical reactions only are calling it as isolated metabolic reaction. बेटा अभी समझ में है ना? और एक बार बोलूं मैं, और समझ में है? दैट मीन्स हमारा बॉडी के अंदर क्या क्या केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं ना, सेम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस आप टेस्ट ट्यूब में भी कर सकते हैं, हमारा केमिस्ट्री लैब्स में भी कर सकते हैं. एंड हम केमिस्ट्री लैब में परफॉर्म कर रहे हैं ना, वो केमिकल रिएक्शंस को हम बोलते हैं आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस. अभी समझ में है ना? हु आस्क्ड? प्रतीक्षा आस्क्ड. सो प्रतीक्षा, you please tell me whether you understood or not. Pratiksha, yes, she understood. Okay, now same question I am asking you. So whether they are living or non-living, you only tell me. See, just try karo. They are living. Okay, Tanishk is telling living. Okay, very good. Then anyone has any ideas? तनिष्क टोल्ड लिविंग. चलो एक आंसर तो मिल गया. ओके, एंड हु एल्स विल से लिविंग, और हु विल टेल नॉन लिविंग? सर रिपीट द क्वेश्चन बेटा. वेरी सिंपल क्वेश्चन श्रवण, वेरी सिंपल क्वेश्चन. हमारा बॉडी में सम केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस. आई टोल्ड यू ना, मेटाबॉलिज्म आई टोल्ड, है ना? आई टोल्ड ना, हमारा बॉडी का अंदर जो chemical reactions है ना, we can also do the same chemical reactions in the test tube also. Then also they will give the same result. हमारा बॉडी में क्या क्या रिजल्ट हमको मिलेगा, the same result you will get it in the test tube also when you do it artificially. And this artificially done chemical reactions are called as isolated metabolic reactions. अभी मेरा क्वेश्चन के बारे में मैं बात कर रहे. And this artificial chemical reactions, are they living or non-living? Are they living or non-living? Tanishk beta bola living, and Anuja she told living, Sakshi told living, whereas Nishikant told Shravan told non-living, and Amrita she told non-living. So alag alag answers दे रही है. So can I tell the answer? सही आंसर बोलूं क्या मैं? Yes, finally Mrudula gave the correct answer. They are either not living, they are not non-living also. You should not consider them as living also, and you should not consider them as non-living also. सर ये से, सर आप कुछ भी बात करता है सर, ये से कैसे बोल सकते हैं सर आप? मैं ऐसे कैसे बोल सकते हैं बोलिए बच्चों? they are, one way you are calling it as they are neither living, or you are calling it as non-living. Understanding it? Sir, why you are calling it as neither living or non-living? Because they are not living. First of all, if you tell, you should not call them it as living. Why? You know, because they are not taking place in the living organisms. And you should not call them as non-living also. Why? Because they are giving the as it is result that takes place in the living organism. That means दोनों, that means ये बीच में हो रही है. That's why I can say it is neither living or non-living. Understood? See, you can't be able to call them as living. Why you can't be able to call them as living? Because it is not taking place in the living organism. And you should not call it as non-living also. Why? You know, because whatever the result हमारा बॉडी में देता है, same result इसमें भी आ रही है. That's why they are either living, neither living और नॉर नॉन लिविंग ऑल्सो. दोनों कैटेगरीज में आता है. सो लिविंग नॉन लिविंग का बीच में आता है. बच्चों समझ में आया? यस, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. ओके, ना अभी मैं दूसरा लू और थक गया क्या? और एक टॉपिक ले लेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? Or Ash, shall I stop? Whatever you say.
मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एंड हमारा क्लास के लिए और 25 मिनट्स टाइम इज ऑल्सो देयर। कैन आई कंटिन्यू बच्चों? कोई आपको ज्यादा तो नहीं हुआ ना? नो, ओके। सो और एक टॉपिक लेता है, ओके ओके। ज्यादा हुआ तो बोलिए बच्चों, प्लीज फील कंफर्टेबल इन द क्लास, ओके। देर इज नो what I call compulsions and what I call restrictions are there in my class. You feel comfortable, feel at home, okay. Now consciousness, feel at home, huh? You are already at home only. Okay, now consciousness. now बच्चों, what is consciousness? कॉन्शियसनेस मतलब क्या है? नाउ सी फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू वेरी इजीली, पक्का आपको समझ में आएगा, वेरी इजीली आई टेल यू। अभी मैं आई एम टीचिंग सम लेसन, है ना? नाउ व्हेन आई एम टीचिंग सम लेसन, यू आर गिविंग सम रेस्पॉन्स। am I correct or not? am I correct or not? That means ability of a student to respond to the teacher, that is called as consciousness. Like that ability of an organism, ऑर्गेनिज्म का अंदर एक एबिलिटी है। व्हाट इज दैट एबिलिटी? टू आइडेंटिफाई any what I call any what I call stimulus. That means that may be physical, that may be chemical, or it may be biological stimulus will be there na, with the help of our sense organs. For example, one of your friend is there, he called you, that means see Sakshi, then Sakshi what she will do, kya chahiye? Am I correct or not? For example, if you are calling your mother, हाँ बेटा क्या चाहिए? You are calling your father, हाँ बेटी क्या चाहिए? That means when you are giving some stimulus, for example, I am there, I am giving you a stimulus. What is my stimulus right now? What stimulus I am giving to you? Tell me. Right now मैं आपको एक stimulus दे रहे हैं. What is my stimulus? Tell me. माई लेसन। क्या इतना सोच रहे हैं इतना छोटा आंसर क्वेश्चन के लिए? राइट नाउ माई स्टिमुलस क्या है बेटा? आई एम टीचर, सो व्हाट स्टिमुलस आई कैन गिव यू? टेल मी। माई लेसन इज माई स्टिमुलस, एम आई करेक्ट नॉट? नाउ माई स्टिमुलस के लिए आप एक रेस्पॉन्स जो दे रहे हैं ना, एंड दैट इज योर कॉन्शियसनेस। अभी समझ में ना बच्चों? दैट मीन्स एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेस्पॉन्ड, एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेस्पॉन्ड टूवर्ड्स एनी स्टिमुलस इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉन्शियसनेस। समझ में ना बच्चों? बेटा समझ में है ना? और एक बार बोलूं सेफ्टी के लिए, ओके ना? ओके, यू टोल्ड यस, आप खुद ही बोला ना यस, आप ही बोला ना। नाउ यू टेल मी व्हाट इज कॉन्शियसनेस? यू सेड एस मतलब यू अंडरस्टूड, सो see, while I'm speaking only Rahul gave the answer. Ability of an organism to respond towards a stimulus is called as consciousness. Perfect Rahul, your answer is perfect. Okay, now so for example, let us take plants. See, plants, they have sense and they respond towards external stimulus. For example, plants, they show response towards light, water, temperature, other organisms, pollutants, and also flowering in particular seasons. These are all what plants, they are showing response, whereas human beings are having high level of response, high level of consciousness. Why? When you see plants also, they will respond, but it's made, there is no doubt, plants they will respond, but प्लांट से कंपेयर, ओह प्लांट का सॉरी, मैं स्पेलिंग मिस्टेक किया, अंडरस्टैंड, PLANT, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा जल्दी जल्दी में टाइपिंग किया ना, इसलिए थोड़ा गलती हो गया, आई एम रियली सॉरी। PLANT। सो नाउ यू इफ यू टेक प्लांट, द प्लांट से आप कंपेयर करेंगे तो एनिमल्स, they are very quick in their response. Why? Animals, they are having well developed nervous system and supreme level of communication of skills. Understanding it? You understand it? So because human beings are having what? The nervous system, hamara consciousness is very sharp and it is very quick when it is compared to the response of a plant. समझ में ना बच्चों? बच्चों समझ में ना? So every organism is conscious only, but animals का conscious है ना थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि ना हमारा बॉडी का अंदर डेवलप्ड नर्वस सिस्टम इज देयर ना, बट नर्वस सिस्टम इज एब्सेंट इन प्लांट्स, दैट्स व्हाई प्लांट रेस्पॉन्स थोड़ा धीरे धीरे होता है, हमारा में क्विक होता है।
Okay, now adaptation, understanding it. See देखो, adaptation मतलब can anyone tell what is the meaning of adaptation बच्चों? Adaptation मतलब can anyone tell adaptation? Okay, can anyone tell acclimatization बच्चों? I will tell you very easy way, पक्का आपको 100% आपको समझ में आएगा. मान लो आपको ठंड लग रही है, मान लो आपको ठंड लग रही है. ठंड लगेगा तो आप क्या करेगा बच्चों? मान लो आपको अभी थोड़ा ठंड लग रहा है, आप क्या करेगा? सिंपल क्वेश्चन. You will wear some sweatshirt. Am I correct? Not. You will wear some sweatshirt. Understand it? That means the gradual. That means dire. What happens? You start responding or changing towards that particular what? Towards that particular change, and that gradual change it is called as what? Acclimatization. बच्चों समझ में ना? धीरे धीरे आप धीरे धीरे you will be getting adjusted towards that particular what I call change, and that gradual development or gradual ability to adjust towards that particular changed condition is called as what? Acclimatization. Whereas adaptation matlab the complete morphological change that takes place in an organism towards any environment. That means मान लो, just example के लिए बोल रहे हैं, मान लो ये एक पोलर बेयर. बच्चों पोलर बेयर तो आपको पता है ना? आई थिंक एवरी वन ऑफ यू नो पोलर बेयर मतलब थोड़ा वाइट बेयर. अंडरस्टैंडिंग इट? polar bear. That polar bear, it is living in what? Thund climatic region. That is the reason why polar bear has huge fur, है ना? Lot of white hairs will be there, and also उसका skin consisting of a fatty layer called as blubber. Understanding it? That means what? The organism, it is permanently changing. Please understand बच्चों, मैं क्या बोल रहा? Please try to understand. The permanent change that takes place in the body of an organism towards the climatic condition is called as adaptation. The permanent change that takes place in the body of an organism towards the environmental condition is called as adaptation. बच्चों adaptation समझ में आया? और एक बार बोलो क्या मैं बच्चों समझ में ना? ओके, नाउ नेक्स्ट वन, होमियोस्टेसिस. बच्चों ये होमियोस्टेसिस है ना, मैं बहुत इजीली आई टेल यू, आपको पक्का समझ में आएगा. मैं बोल रहा है ना, विश्वास करो मुझे, आपको 100% समझ में आएगा. आई टेल यू वेरी सिंपल एग्जांपल. नाउ यू आर देयर, you take one thermometer, 100 रुपया में मिलेगा बच्चों. you go to any medical shop and 100 rupees पे आपको thermometer मिलेगा. Understanding it? Now you take thermometer. Now what you do ना, you try to take your body temperature in winter season. Tell me what is our body temperature बच्चों? 98.4 Fahrenheit. करेक्ट ओनली ना? और डिग्रीज में आप मेजर करेगा तो 36 डिग्री सेंटीग्रेड. एम आई करेक्ट और नॉट? बिकॉज टेम्परेचर हम दो तरीका से मेजर कर सकते हैं, फॉरेन हीट से भी मेजर कर सकते हैं एंड डिग्रीज में भी मेजर करेगा, है ना बच्चों? सो विंटर, बच्चों यू टेल मी, विंटर में आउटसाइड टेम्परेचर दैट मींस एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर कितना होगा? ये 18, अंडरस्टैंडिंग इट? 17, 16, है ना? आउटसाइड टेम्परेचर कितना है बच्चों? 16 डिग्री सेंटीग्रेड. बट हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या है? 36 डिग्री सेंटीग्रेड. एम आई करेक्ट और नॉट बच्चों? मान लो सेम थर्मोमीटर यू टेक एंड यू ट्राई टू मेजर योर टेम्परेचर इन समर सीजन. समर में बाहर का टेम्परेचर 45, 46, 47 will be there. Am I correct or not? But that time also your body temperature is 36 to 37 degrees centigrade only. Did you notice it बच्चों? That means बाहर कुछ भी चेंज होने दो. प्लीज अंडरस्टूड बच्चों, बाहर कुछ भी चेंज होने दो, बट हमारा बॉडी विल मेंटेन द सेम what I call constant environment. Am I correct or not? So maintaining the internal body environment constant. Again, maintaining internal body environment constant from ever changing outer atmosphere, the outer atmosphere, and that ability of an organism, it is called as what? Homeostasis. बच्चों
होम्योस्टेसिस समझ में ना? दैट मींस सी, बाहर एटमॉस्फेयर में कुछ भी चेंज होने दो, बट हमारा अंदर शरीर का अंदर एटमॉस्फेयर है ना, इट ऑलवेज विल बी कांस्टेंट. दिस एबिलिटी इट इज कॉल्ड एज व्हाट? होम्योस्टेसिस. बच्चों समझ में ना? और एक बार बोलूं क्या मैं? प्लीज आस्क बच्चों. यू आस्क 10 times also I will tell, but you should understand. You know what is the meaning of real understanding? In my absence also you should be able to answer. रिपीट. ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल रिपीट. बेटा देखो मैं क्या बोल रहे, देखो बाहर कुछ भी चेंज होता है. मान लो समर में व्हाट विल बी द, सी यू ओनली टेल मी अनूप, यू ओनली टेल मी समर में बाहर कितना टेम्परेचर होता है? 45, 46, 47 है ना? वेर एज विंटर में बाहर का टेम्परेचर क्या है, एनवायरमेंट में टेम्परेचर क्या है? 18, 17, 16 इतना कम रहेगा. बट विंटर में भी हमारा बॉडी इट इज मेंटेनिंग द सेम टेम्परेचर, एंड समर में भी इट इज मेंटेनिंग सेम. दैट मींस बाहर कुछ भी होने दो, बाहर कुछ भी होने दो, बट हमारा बॉडी का अंदर का एटमॉस्फेयर इट इज ऑलवेज कांस्टेंट. दैट एबिलिटी of an organism to maintain a internal body environment constant from the ever changing external environment is called as homeostasis. बेटा अनूप समझ में है ना? और एक बार बोलो. यू आस्क मी बच्चों, एनी टाइम you ask, but you should understand. Any number of times you ask. Okay, and today last topic बच्चों, I am leaving today. This is the last topic. Coma patients are living or non-living? Coma patients are living or non-living? That's it. This is the last topic today. With this I am leaving you. Okay, कैसे बोल रहे हैं आप? कोमा पेशेंट्स कैसे बोल रहे हैं आप? लिविंग कैसे बोल रहे हैं आप? हाउ कैन यू टेल दे आर लिविंग? Yes beta, your answers are yes, coma patients are living only, but how they are, how we are telling they are living? Yes, क्या शानदार आंसर श्रवण, सी कितना अच्छा आंसर दिया. यस, दे डोंट रेस्पॉन्ड, बट अंदर शरीर का मेटाबॉलिज्म तो चल रहा है ना. यस, करेक्ट करेक्ट निश श्रवण, वेरी वेरी गुड बेटा, and I'm very very happy for you. You gave the perfect answer. So yes, even see देखो अमृता also gave the perfect answer. See, कोमा पेशेंट्स आपको क्या लगता है ना, हाँ दे आर नॉट मूविंग दैट्स व्हाई दे आर डेड. बच्चों ऐसा नहीं है, दे आर नॉट मूविंग, बट शरीर का अंदर मेटाबॉलिज्म तो आराम से चल रही है. Understanding it? So that's why the coma patients, though they are not responding, you should not consider them they are non-living. They are living बच्चों. Understanding it? I already promised you this is the last topic I'm going to leave you, and I'm leaving you with this topic. Understanding it? That is cellular organization. बच्चों cellular organization मतलब if you take हमारा body, if you take हमारा बॉडी, बच्चों सबको पता है, छोटा बच्चा को भी पता है that our body it is made up of what बच्चों? Cells. Am I correct? Not even small kid also know that our body is made up of cell. Now you tell me, आप खुद ही बोलिए cell जैसे ही है, then how the body will be formed? You only tell. एक छोटा क्वेश्चन, it's not a big question also. Cell जैसा ही है, then how your body will be formed? है ना? That means हमारा cells they need to form a group, and this group of cells only are calling it as tissue, and this group of tissues that makes organs, and group of organs they make what? Organ systems, and many organ systems they form organism, and this arrangement is called as what? Cellular organization. This is sequence of arrangement, this is sequence of what? Arrangement of cells in form of a gigantic body, and that only it is called as what? Cellular organization. बच्चों समझ में ना? With this today I completed what? The defining characters of organisms. That means first topic is finished. बच्चों as I already promised this is the last topic, so I am leaving you. But before I leave, you have any doubts बच्चों? Before I leave, you have any doubts? No? Okay, then I'll meet you tomorrow बच्चों. Thank you so much. बाय चिल्ड्रन. में मिलेगा कल 11:30 मेरा क्लास है. सर प्लीज एक्सप्लेन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब देखो हमारा बॉडी इट इज मेड अप ऑफ सेल्स, है ना बेटा?
what, see, your body is there beta, your body is made up of what, cells है ना. Now cell, मेरा क्वेश्चन क्या है ना, मेरा क्वेश्चन क्या है ना, सेल जैसा ही है, then how your body will be formed. You understood my question, आंसर में देता है, you need not to give the answer, but क्वेश्चन समझ में है ना मेरा क्वेश्चन, सेल जैसा ही है, then हमारा बॉडी how it will be formed. Is there any चांस है क्या? No. Am I correct or not? So the cells है ना, they need to form a group, and this group of cells, it is called as tissues, and the group of tissue, it is called as organs, and group of organs, it is called as organ systems, and many organ systems, they form what, the body. And this arrangement, I repeat once again bachcho, this arrangement of the cells to form the discrete body is called as cellular organization. The ability of a cell to join, the ability of a cell to join, to form tissues, organs, organ systems, and thereby body, and this sequence, it is called as cellular organization. तनिष्क बेटा समझ में है ना आपको? और एक बार बोलूं मैं, बोलना है क्या बेटा? अंडरस्टूड, ओके. Can I take leave? Sir, do we want to take our notes of this? Yeah, beta, you have to take. Today, this is not introduction, Anuja. Today, hum proper class. We have taken proper class. Isolated metabolic reactions are neither living nor non-living. Amruta, she is asking, isolated metabolic reactions, you should not call them as what, living also, and you should not call them as non-living. That's why we called it as what, neither living or non-living. Understand? See, you should not call them as living. Why? You know, they are not taking place in the organisms, they are taking place in the test tubes. Correct only na beta, Amruta? Whereas you should not call them as non-living also. Why you can't call them as non-living? Because whatever the product, it is coming in our body, the same tarika ka product, it is coming in the test tube also. That means the end product of this chemical reaction is same. That's why you can't call it as non-living, because it is not taking place in the body of an organism, so you can't call it as living also. So dono mein it is not fitting. That's why you are calling isolated reactions are either living, neither living nor non-living. Beta samajh mein na? Yes. See, Nishikant, Shravan also gave the perfect answer. Whatever I told, and he told. Very good. Shravan, very, very nice. And before I leave the class, बच्चों, मैं आज आपको एक लिंक भेजता है. I will send one link, and you please add into that link so that you will be entering into my group. Understanding it? And a notes उधर मिलेगा आपको. I will post this notes into that group. Okay, beta? Please join through that link. Okay? Can I take leave? I'll meet you tomorrow, bachcho. Okay? Bye. Bye, children. Please take care. Okay?